Thank you, DJ. As we are about to witness the quarterfinals, before that, I have one question for my senior partner, Ashok Ji Naik sir. What actually made you to join in this field as a commentator? Because we have been hearing you for quite number of years down the memory lane, but you were the player during your days. And what actually made you to take this as a profession? सर शुरू में छोटे छोटे जो कि टूर्नामेंट होते थे तब मैं कमेंट्री करता था। मेरे साथ समीर पांड्रे, हम दोनों कमेंट्री करते थे। लगभग सागर 10 साल ऐसे गुजरे, लेकिन एक बिल्कुल हॉबी थी ये कमेंट्री की। और 10 साल ऐसे गुजरे जो सिर्फ गुलाब का फूल मिलता था मैच समाप्त होने के साथ। तब पार्लेजी बिस्किट थे, पार्लेजी, तब ये मिरिंडा कोका कोला ये कुछ नहीं था। तो मैच समाप्त होने के बाद पार्लेजी का बिस्किट या नींबू शरबत ये मिलता था, और जाते वक्त गुलाब का फूल मिलता था। ये ट्रॉफी भी वो उस वक्त नहीं मिलती थी, लेकिन ऐसे में 10 साल गुजरे, लेकिन बिल्कुल एक हॉबी थी। और एक बार कनकौली में हमने बड़ा टूर्नामेंट किया, दूसरे दिन में बिल्कुल अखबार में नाम भी आ गए। बस वही से शायद घर वाले भी थोड़ा खुश हो गए, नहीं तो वो उनकी भी डांट पड़ती थी। अरे क्या भाई, कुछ स्कूल में नहीं, अभ्यास भी नहीं, पढ़ाई भी नहीं कर रहे हैं, और ये बिल्कुल खाली पीली फुकट का काम कर रहे हैं। लेकिन सागर एक बात ज़रूर बोलूँगा, सिंधुदुर्ग हो गोवा, ये दोनों की बिल्कुल आशीर्वाद है। और जो किया बचपन में वो पूरा सदगिरी, मैं तो कहूँगा चक्रवाट व्याज के साथ बिल्कुल पूरा मिल गया, पैसे के साथ, सम्मान के साथ, ये सब मिल गया। और आज भी शायद 30-35 साल के बाद भी बिल्कुल पैर ज़मीन पर है। बस मैं तो कहूँगा ये अच्छी बात है। कभी दिमाग में क्रिकेट नहीं गया, तो कभी गुजरे 100 से भी ज़्यादा कमेंटेटर का साथ मिला। बिल्कुल दोस्तों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इस साल सागर के साथ भी मुलाकात हो गई। Yes, sir. Thank you very much. It's an honor for me to join you in this commentary box. Meanwhile, quarterfinals is about to commence with the umpire's call, asking whether scorer, are you ready? Yes, sir, we are ready, and here we go. Amir Gadegar to continue. First delivery has been struck straight down the ground towards the long on area. A wonderful impact along the carpet to take a single. With the single, Rupesh opens the account for himself as well as for his team. Amir Kadekar knows the importance of the wicket of Rupesh Gaonkar. Another full pitch delivery, missed by a couple of inches. That was a good delivery that has been bowled by Amir Kadekar. He is a shrewd bowler, and every team from all over Goa needs Amir Gadegar in their playing 11. Such is the prospect, such is the character. Amir Gadegar is meanwhile delivering left arm round, slightly outside the off stump as the ball goes closer to the bat, slightly inside the guideline, deviating slightly away from the batsman. No signal from the umpire, concludes as a dot ball. Another good delivery straight to the covers. Extra cover fielder takes the catch. And Ranganath back to the pavilion at the score of 1-1 for the loss of 1 wicket. So let's see who is going to be incoming batsman. And sir, one more question. What it would be, what the scenario would be if there is no commentary at all during the matches? क्या कहेंगे सर, बस थोड़ा सा अजीब गरीब का सवाल है। सागर आने वाले 24 फरवरी को पदार्पण हो रहा है 58 साल में। तो मैं कहूँगा बिल्कुल सूरज जिस तरह से ढल रहा है, कमेंट्री भी हमारा बिल्कुल शाम का दौर चल रहा है। बहुत जल्द 1-2 साल में रुकेंगे, क्योंकि बड़ा लड़का वो नौकरी कर रहा है, इंजीनियर है। छोटा लड़का वो भी इंजीनियरिंग की एग्ज़ाम दे रहा है, आने वाले मई महीने में उसका भी पूरा हो जाएगा। थोड़ा सा बच्चे भी कह रहे थे कि बस अब पापा रुको, थोड़ा सा बहुत किया है तुमने, नाम कमाया है, इज्जत कमाई है, ये हमारे लिए काफ़ी है। तो बस 1-2 साल में बिल्कुल ये सफ़र बिल्कुल हम भी सोचेंगे कि रुकना पड़ेगा। But people want to hear a lot more from you. Hope
you not decide to retire, maybe out of a hobby. Even if you decide to retire, then we'll be asking you to come in the very ground. Meanwhile, a boundary has been struck by Dheeraj. Left-handed batsmen have come, and I've heard Amir gets a little bit tense when he sees a left-handed batsman on the striking end, and that nervous things, the instinct of some players make them believe. Another boundary has been scored. Dheeraj strikes. Let's see what is going to happen next. Meanwhile, a strong connection, but a fielder in act takes the catch, and Amir gets rid of Dheeraj. Second wicket, back to the pavilion. First over in progress. Total moves to 5. 5 for the loss of 2 wickets. सागर बात कर रहे थे जब एक छोटी सी मुलाकात मेरी जो कि यूट्यूब पर हुई थी 2000 जय भोसले ने ली थी एक छोटी सी मुलाकात मैंने बात की थी 2023 दिसंबर के साथ बिल्कुल रुकना पसंद करूँगा लेकिन दूसरे दिन बिल्कुल कई फ़ोन आ गए कई लोग ऐसा फ़ोन किया कि हम तुमको बिल्कुल घर पे आकर उठा कर ले जाएंगे कमेंट्री के लिए एक ने बोला अरे तुम क्या हो तुमने क्या किया शुरुआत किया है ये सब ऊपर वाले के हाथ है शुरुआत करना है और समाप्त करना है कई लोगों ने ऐसा भी कहा कि जब तक तुमको जम रहा है जब तक तुमको लोग पसंद करें तब तक आते जाओ लेकिन मैं तो कहूँगा दोस्तों ये सब ऊपर वाले की देन है वो सब खेल कर रहा है बस और आपका आशीर्वाद है दोस्तों देखेंगे सफ़र कितना लंबा हो जाएगा. Meanwhile, a switch hit and what a strike from Rupesh, taking the ball away from the deep fielder who has been plotted at the covers. No chance for the fielder. Vittal Das, the bowler, nicknamed Boon, I believe. And he starts with a boundary. Rupesh now taking the charge as the first over was a decent over bowled by Amir Gadikar. Just 5 runs and 2 wickets in that power play over. Now Rupesh showing his intentions, cutting loose, a boundary. Second delivery, that's the pressure felt as Rupesh is on striking end. Boon feeling the pressure, the intense situation, delivers a wide delivery. Score moves to 6. I beg your pardon, 10. 10 onto the board quickly into the second over. Rupesh on the striking end. Another good delivery, Yorker. Vittal Das holding his nerve, delivers in the right zone after a short break as he walks back to his runner back thinking, what should I deliver next? Because Rupesh is such a batsman, even a inch here and there, the ball will disappear out of the park. So here we go finally with the next delivery. And this is a lovely shot, but straight to Somesh Prabhudesai at the cow corner. With the single score, moves to 11. As the sun is setting, the wind or the breeze is also disappearing off the ground. And now this game is going to be a very crucial one. Again, a batsman skidding as he was going on to his back foot. That's why he was not able to maintain the balance. Tushar back to the pavilion without even opening the account. Third wicket goes down at the total of 11. DJ. So capable of because he has shown his capacity in the previous match. Let's see what he can do now. Vittal Das with the ball. Good delivery. There's a strong connection. Chance of a catch. A fielder from the cow corner. Whitish long on catches the ball. And Mayur back to the pavilion without troubling the scorer. But the intent was right. Not getting the distance rather than getting the elevation. As we were discussing about
Ashok Ji Naik, but sir, we would request you not to stop because this is the only way we meet each other, even distance apart, and you enjoy your time, give your services to the tournaments and your sweet voice to the people. So we definitely want you to hear for more and more years because these years will never get tired of your sweet voice. बिल्कुल सर, देखेंगे सब कुछ आदमी के हाथ में नहीं होता। जो होता है वो सब ऊपर वाले के देन है, ऊपर वाले के हाथों में होता है। देखेंगे सर, बिल्कुल। Meanwhile, Rupesh plays watchfully, knows there's a fall of another 2 wickets, doesn't want to lose a wicket, plays watchfully. Maybe has understood that this is the final delivery of the second over. So guides the ball towards the square leg for a single. And that single takes the total to 12. 12 for the loss of 4 wickets after the completion of 2 overs. DJ. Retirement, but we are not going to miss an opportunity to hear from him. Over to Ashok Ji Naik with further 2 overs. थैंक यू सर। गेंदबाजी में परिवर्तन। सोमेश अच्छा शॉट, मिड विकेट बाउंड्री पर सिंगल के लिए निकले दोनों बल्लेबाज। वो टोटल नहीं दिखाई देता हुआ, लेकिन जब तक ये खिलाड़ी मैदान पर है, सागर रुपेश है मैदान पर, उनके ऊपर दारोमदार है। 11 गेंदों का खेल बाकी है। कम से कम 3 या 4 तो बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे। सामने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी हो रही है कामाक्षी शिरोड़ा क्रिकेट टीम की। छोटी गेंद, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, अच्छी किस्मत बल्लेबाज की। गेंद बल्ले पे नहीं लगी। पिछले मैच के हीरो, मैन ऑफ द मैच सोमेश गेंदबाजी पर। अच्छा शॉट, बेहतरीन शॉट, इस बार ऑन साइड पर काउ कॉर्नर पर फील्डर। 1 रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। सिंगल बना फिर से एक बार, लेकिन बड़े शॉट की दरकार है। रुपेश स्ट्राइक पर। यह विकेट महत्वपूर्ण है मैदान पर स्पार्टन क्रिकेट टीम की। और अच्छी गेंदबाजी ऑफ स्टंप पर, बिल्कुल गेंदों को रख रहे। ऑफ स्टंप से बाहर वाइड बॉल का इशारा, लेकिन ऑन साइड पर लेग स्टंप पर गेंद को पिच नहीं कर रहे हैं। मालूम है कि यहां पर गेंद अगर मिली तो बल्लेबाज बड़ा शॉट लगाएगा। और गेंद खड़ी हो गई अपने पॉलोत्रो में। सोमेश गेंद के नीचे, दूसरे प्रयास में कैच छूटा। यह मौका महंगा साबित न हो कामाक्षी पोंडा क्रिकेट टीम को। 1 रन जुड़ गया। रुपेश भी थोड़ा सा नाराज हो गए थे जिस तरह से गेंद बल्ले पर लगी थी, लेकिन कामाक्षी पोंडा के लिए यह खतरा ना बन जाए मैदान पर। अगर 2 शॉट 3 शॉट लगे तो मैच में कमबैक होगा। बहुत अच्छी गेंद इस बार, बहुत अच्छी गेंदबाजी। टॉस जीता, टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला। आज इस टूर्नामेंट की बात करेंगे, एक ही टीम रॉयल वॉरियर्स कानकोन ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी की। सागर, थोड़ा सा फैसला अजीब लगा, लेकिन अच्छा मैच रहा, बहुत अच्छा मुकाटे का मुकाबला हुआ। ये फिर से गेंद खड़ी हो गई। देखना होगा, गेंद निकली, शायद बल्ले पे बीचों बीच नहीं लगी थी, थोड़ा सा कोने पे लगी थी, लेकिन फिलहाल गेंद निकली लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स में एक बड़ा शॉट 6 रन के लिए, और स्कोर होता हुआ टोटल 22। 3 ओवर की समाप्ति के बाद डीजे। गेंदबाजी पर विश्वजीत, मौका मिल चुका है रुपेश को। अगर 2 बड़े शॉट लगे तो मैच बिल्कुल कड़क हो जाएगा मैदान पर। ओह, ये लगा सिक्सर, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर 6 रन के लिए 28 टोटल स्कोर डीजे।
एंकर डीजे 28 पर पहुंचा टोटल स्कोर। विश्वजीत अपने बॉलिंग मार्ग पर। इस अंतिम ओवर का खेल जारी। क्वार्टर फाइनल का मुकाबला, चौथी टीम सेमीफाइनल की दावेदार। कल दो मुकाबले पहले सेमीफाइनल के होंगे और बाद में अंतिम मुकाबला फाइनल का मैच होगा ठीक 3 बजे इस टूर्नामेंट का। अड़े बल्ले से कारपेट के साथ क्या दूसरे के लिए मुड़ेंगे, देखना होगा। सोमेश आते, गेंद को उठाते, थ्रो करते स्ट्राइक एंड पर, और इसी के साथ दूसरे रन के लिए कोशिश मैदान पर और 2 रन मुकम्मल किए। 30 पर पहुंचा इन 2 रन के साथ। लेकिन सागर जो धड़पड़ थी, हलचल थी रुपेश की स्ट्राइक के लिए, वो सफल दिखाई देती हुई मैदान पर। और देखना होगा बचे हुए गेंदों पर अगर 2 शॉट या 1 शॉट, कोशिश तो जरूर होगी रुपेश की बल्लेबाजी में। फुल टॉस उड़ाया मिड विकेट पर 6 रन के लिए। बहुत ही बेहतरीन शॉट सागर। Definitely, sir, and all the eyes will be on Somesh because he has dropped the catch. And after that survival, Rupesh blasting 2 sixes. And this is the beauty of this game. You lose a catch, and a batsman gains the confidence in this shorter format. Rupesh striking. Over to you, sir. थैंक यू सर। और दूसरे इनिंग में बल्लेबाजी, थोड़ा सा हवा का झोंका भी थम चुका है, थोड़ी सी ठंडक भी शुरू हो जाती है। और आखिर में शाम के दौर में बैटिंग करना उतना आसान नहीं होता। ऑफ स्टंप पर इस बार नीचे रही, बल्ला घुमाया, गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं। विश्वजीत गेंदबाजी करते हुए एक स्लॉग ओवर में, अंतिम ओवर में बड़े शॉट लग रहे हैं बल्लेबाजी में। और देखना होगा किस तरह से रुपेश इस ओवर को समाप्त करते हैं। 35-40 का टोटल फाइटिंग टोटल होगा शाम के दौर में मैदान पर। ओह, बड़ा शॉट फिर से एक बार मिड विकेट पर। सागर, हम 2 शॉट की बात कर रहे थे, ये तो तीसरा लगा। सोने पे सुहागा मैदान पर। स्पार्टन क्रिकेट टीम का स्कोर हो चुका है 42। अब मात्र बल्लेबाजों को संघर्ष करना पड़ेगा कामाक्षी शिरोडा क्रिकेट टीम को। Definitely, sir. But not to forget Amit Naik, who is watching the match from behind the stumps. He is also capable. बिल्कुल सर, अमित नाइक है, सोमेश है, पिछले मैच के हीरो अमीर गडेकर है, उन्हीं के साथ विश्वज बल्लेबाजी है टीम की। लेकिन 42 का टोटल, देखना होगा किस तरह से होता है समाप्त। 48 बने तो 39 का टारगेट होगा, और वो टारगेट नीचे तरफ से एक संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी मैदान पर बल्लेबाजों को। छोटी गेंद पुल के स्क्वायर लेग बाउंड्री पर लगभग, और एक बड़ा शॉट, 4 छक्के लगे, कैच छूटा, 4 छक्के लगे। टोटल हो चुका है 48 और 49, 49 का टारगेट। क्वार्टर फाइनल का मैच सागर, अब मेहनत संघर्ष होगा मैदान पर, तगड़ा मुकाबला। Definitely, sir. As what was looking to be just 20 or 30 runs at the end of the inning, and Rupesh, what a player! Never stands out of the limelight. Delivers at the right occasion for his team. Whenever the team is in crisis, Rupesh stays till the end. A chance was offered, and the drop catch has been costly for Kamaxi Cricketers at the moment, but nevertheless. 48 on the board, 49 is the target required, and this will boost the confidence. We can see the dugout of Spartan Warriors jumping and applauding the efforts. Now there's a smiles on the faces of the player as they go inside the ground to take the charge in the fielding. Meanwhile, short span for the DJ to play the music. DJ, your time starts now.
talking about the batting lineup of Kamaxi Cricketers, and the first name that have come in my mind was Amit Naik. And now we can see Amit joining Somesh Prabhudesai to open the inning as 49 runs required from 4 overs. A big total which is gettable. Nothing is impossible in the game of cricket, but the fall of wickets will definitely put the batting team onto the back foot. There will be lot many things to be witnessed. Meanwhile, here we go with the second innings, the run chase in the quarterfinals. Let's see which is the team who is going to book their spot as the fourth semi-finalist. Good matches on. And meanwhile, announcement for the members of Kulcharam Kakoda Shikmotsav Samiti that practices of Romtamer will start from 24th February in the evening. So requesting all the members, please do join and do attend the practices from 24th onwards, as there will be competitions all over Goa that has been announced by the organizers of Shikmotsav committees all over. So meanwhile, let's see Dheeraj to begin in the power play as Somesh gains the striking end, and another big name at the non-striker end. Short pitch delivery, there's a pull shot, fielder Mayur, he takes, and Somesh departs for the first time in these quarterfinals without even troubling the scorer. Ashok sir, at one time Somesh was having a very good time with the bat. He was unbeaten in this tournament, and now in this pressure situation he is out on the very first delivery he has faced. बिल्कुल सर, पिछले मैच के हीरो थे, इस मैच में बिल्कुल जीरो बन गए क्योंकि डांट पड़ेगी, कैच छूटा है तो पूरी टीम की, और रन भी नहीं बने। शायद बल्लेबाजी में दमखम था, काफ़ी निराश मन के साथ। लेकिन सागर, मैं कहूँगा क्रिकेट का हिस्सा है। आजकल विराट कोहली भी काफ़ी 2 साल से संघर्ष कर रहे हैं सेंचुरी के लिए। ये क्रिकेट का दोस्तों एक हिस्सा है। कभी कभी मुश्किल सा कैच भी पकड़ा जाता है मैदान पर, और आसान कैच भी बिल्कुल छूट जाते हैं। लेकिन देखना होगा किस तरह से ये अमित नाइक पर दारोमदार है इस मैच के। वो खिलाड़ी है, मैच विनर बल्लेबाज है। देखना होगा क्या होता है मैदान पर। Definitely, sir. But I think definitely that catch was hunting Somesh. That's why that fall of wicket. Otherwise, a confident-looking batsman Somesh is to be. Meanwhile, short pitch delivery, chance of another catch, but ball has been hit away from the fielder. Fielder was placed at the wide-ish long on, but the gap that has been pierced, ball goes out of the boundary rope. Requesting the young guns, Barik Burge, much a boundary bhitar hoi chhe nahi. Barik Burge સાથે boundary cha bahar. So meanwhile, the boundary to start with after the fall of wicket on the very first delivery. Amit taking the charge. Another good strike, chance of a catch. Let's see who is going to take it. Rupesh running, but he waits for his fielder, and the catch has been taken. Oh my dear, and look at the supporters jumping with joy. And that is the fall of Amit. Second good batsman back to the pavilion. Dheeraj strikes for the second time. 4 runs on the board. 3 deliveries bowled in the power play. And 2 good wickets back to the pavilion. Ashok sir, what is your say now about this match from here on? देखो सागर, ये कैच उतना आसान नहीं था। दिखने में आसान लग रहा था, प्रेशर था फील्डर पर, और जिस तरह से फील्डर शुरू में नीचे आ चुका था, मन में भी थोड़ा सा संभ्रम हो चुका कि ये लेता ही या नहीं, लेकिन आखिरकार कैच पकड़ा गया। आसान नहीं था बिल्कुल कैच, और प्रेशर में मैच, जब क्वार्टर फाइनल का मैच है, दबाव मैच पर है, तो ये कैच आसान नहीं होता। फिलहाल थोड़ा सा बैकफुट पर जरूर ढकेल दिया है इस कैच के साथ, क्योंकि 2 खिलाड़ी जो दिग्गज खिलाड़ी वो आउट हो चुके हैं। And even when the ball was hit miles in the air, even Rupesh was running, maybe just to see if the catch is dropped, then he gets the second attempt. So that was the important wicket that has gained by Dheeraj for his side. Courtesy, a good fielding display by Spartan Warriors after those 4 sixes from Rupesh that boosted the confidence of Spartan Warriors. Meanwhile, another strong prospect, the strong character on the striking end, none other than Sarvesh Shirodkar. He is also capable of biggies.
Switch it attempted straight to Ranganath, the big guy. Big guy hits the ball towards the covers to another big guy. Slightly smaller in size compared to Sarvesh, but stops the ball at the covers. A switch it is on, but a decent over, we must say. 2 wickets, 5 runs so far in this over. And that brings Amir Gadekar on the striking end. He is also a very shrewd character out in the middle. Can play all around the park. Switch it is on. What a connection. Waited has shown the switch to the bowler much before he could deliver. And the sweetest part of the bat, meat of the bat, takes the ball out of the boundary rope for a beautiful 6. Treat for eyes to watch, and a extraordinary shot has been executed, which is common in tennis ball cricket. Sixer takes the total to 11. Amir taking the responsibility has delivered a beautiful power play over. Now taking the charge at the striking end. Another switch hit. What a lovely strike through the gap. A fielder running just in anticipation of stopping, but could not able to reach even much closer to the ball. And that boundary to conclude a beautiful over, we must say, as 2 wickets were fallen, but even beautiful over for both the sides. Even runs have been scored. 15 on the board after completion of 1 for the loss of 2 wickets. DJ. Gaurish with the ball to deliver the second over. Sarvesh on the striking end. And Sarvesh has also have hit 19 sixes in one of the tournament some 8 to 10 or 11 years back. Let's see whether he can continue that hitting again, whether the history is going to repeat on this ground. Strong guy on the striking end, but Gaurish is also a shrewd bowler. He has a different type of variety in his bowling. This is going to be a very good contest. Oh my dear! The ball was looking to be dropping as a Yorker, but the strong swing of the bat right from the sweetest part of the bat, making the ball to travel the distance right on the sports complex. And look at the impact. Even after hitting the walls, the ball has reached inside the circle. That is the power of Sarvesh Shirodkar. That sixer takes the total to 21. Gaurish has been welcomed with a biggie. Switch it, another connection. There's a fielder in act, only to watch the ball sailing above his head. Second 6 from the bat of Sarvesh, and Sarvesh going to repeat the history once again. 2 sixes from his bat on the 2 deliveries that he has faced. Score moves to 27. More 22 runs required. Whether Gaurish can take a wicket now, otherwise Sarvesh is not going to stop here from here. Oh my dear, a chance of a catch. Fielder under the ball. Oh my God. What would have been a catch has been dropped, and even the ball goes out of the boundary rope for the 3rd time. Sarvesh is unstoppable. History is going to repeat. 3rd 6 from the bat of Sarvesh, and he has listened to the comments and now delivering with the bat. The professional player with the professional willow in his hand, and now striking the professional tennis cricket ball of Khanna Company out of the ground. 3rd sixer from the 3rd delivery that he has faced. Short pitch, chance is created now. Let's see whether the same fielder can take it. Oh my dear, he holds on at the very last moment. Continuing the hitting as Rupesh has done. So far 3 sixes have been hit by Sarvesh. And now score moves to 34. 15 more required. 2 more overs to be bowled. Amir, what a strike. No need even to look at the ball into the compound wall. And that's the 4th sixer of Gaurish over. Sixer
taking the total to 40. Just 9 runs required. Whether Amir Kadekar can finish off in style. Last delivery of this over. Whether he can connect for a 6. Lovely Yorker. Equally well played. Plays of watchfully knows that there was an element of risk involved. Takes the ball onto his legs as a single has been taken in form of leg by. And now 8 runs required from here on from 12 legal deliveries. That makes Rupesh to take the ball in his hand. And now over to Ashok Ji Naik. थैंक यू सर। 2 ओवर का खेल बाकी है, 12 गेंदों का 8 रन रुपेश गावकर गेंदबाजी पर, लेकिन ये 2 बल्लेबाजों ने मैच बिल्कुल नजदीक खड़ा कर दिया। 12 गेंदों में 8 रन मैच को जीतने के लिए। और गेंद खड़ी हो गई, कैच का मौका और इन मौके पर सफलता तीसरे ओवर की पहली गेंद पर। अभी भी मैच 19-20 का है मैदान पर। क्रिकेट का खेल है, 1 रन बनाने के लिए कभी कभी 4-4 विकेट जाते हैं और कभी 6 रन चाहिए तो एक गेंद पर भी मैच समाप्त हो जाता है। देखना होगा किस तरह से मुकाबला समाप्त होता है। अगर जीत गए स्पार्टन क्रिकेट टीम तो रुपेश दावेदार हो गए, बिल्कुल कोई जवाब नहीं होगा। शायद जाते वक्त सोमेश को तो डांट पड़ेगी। अगर जीत गई कामाक्षी शिरोडा क्रिकेट टीम तो बस आराम के साथ सोमेश को भी खाना अच्छा लगेगा रात के दौर में। बिल्कुल देखना होगा, क्रिकेट है दोस्तों, भाकित करना गलत बात है। नए बल्लेबाज मैदान पर दोस्तों, थोड़ा जल्दी चलिए प्लीज, हरी अप। 11 गेंदों का खेल और अभी भी चाहिए मैच को जीतने के लिए 8 रन। आमिर गडेकर आउट होने के बाद नए बल्लेबाज मैदान पर। ऑफ स्टंप पर अच्छी लाइन पर बड़ी सूझबूझ के साथ गेंदबाजी कर रहे रुपेश गावकर। मालूम है जो शॉट लगे वो लेग स्टंप पर गेंद, ओवर पिच छोटी गेंद पर शॉट लगे हैं, यह जानकर उन्होंने बिल्कुल अच्छी लाइन पर एक सफलता मिली। उसके बाद एक डॉट गेंद। आने वाले 10 गेंदों का खेल अभी भी बाकी। 8 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए 10 गेंदों में। सामने गेंद को इस बार कारपेट के साथ ड्राइव किया, लंगन बाउंड्री पर फील्डर सिंगल बनता हुआ। अच्छा क्रिकेट मैदान पर। मालूम है कि बड़े शॉट के अगर मोहजाल में फंस गए तो अगर विकेट चला गया तो दबाव बढ़ जाएगा आने वाले नए बल्लेबाजों पर। सिंगल बना। 9 गेंदें अभी भी बाकी है मैच की और 7 रन अभी भी दूर है मुकाबला क्वार्टर फाइनल का। बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, फिर से अच्छी गेंद। मैच में कमबैक कर रहे रुपेश गावकर। यह मुकाबला लगभग आखिरी ओवर पर चला जाएगा, ऐसे संकेत लग रहे हैं मैदान पर। जब तक आमिर गडेकर मैदान पर थे लग रहा था शायद ये ओवर में मैच समाप्त होगा, लेकिन विकेट चला गया, बाद में सिंगल और नए बल्लेबाज आकर थोड़ा सा दबाव में बल्लेबाजी में, क्योंकि प्रेशर मैच है, क्वार्टर फाइनल का मुकाबला है मैदान पर। राइट आर्म ओवर द विकेट कमेंट्री बॉक्स की ओर से। और ये खराब गेंद, फुलटा स्वीप किया नो मैंस लैंड में। गेंद चली गई स्क्वायर लेग सी बारिका से बाहर 6 रन के लिए। और अब मात्र मैं सागर कहूंगा, सोमेश ने बिल्कुल राहत की सांस ली होगी मैदान में, जो रुकी थी। मालूम था जाते वक्त बिल्कुल जो कि निश्चित रूप से डांट पड़ती थी। रात को बिल्कुल याद रहता है जब ऐसा मुकाबला होता है, अपने से गलती होती है तो रात को बिल्कुल वो मैच याद रहता है। और बड़े शॉट के साथ मैच को समाप्त किया। चौथी टीम पक्की, कामाक्षी पोंडा शिरोडा क्रिकेट टीम इस टूर्नामेंट की, गणेश स्पोर्ट्स क्लब के आयोजित इस टूर्नामेंट की चौथी टीम सेमीफाइनल में पक्का स्थान कर चुकी है। तो दोस्तों कैप्टन ऑर्गेनाइजर के साथ बात करके चलो, क्योंकि सेमीफाइनल किस तरह से होंगे, या लॉर्ड्स होंगे या कोई और होगा, ये बात तो ऑर्गेनाइजर की होगी। सेमीफाइनल के मुकाबले कैसे होंगे, लेकिन हम आपके लिए वक्त तो जरूर बता सकते और बिल्कुल जानकारी दे रहे हैं।